Good morning, everyone. Welcome to Crack Grade B and welcome to the current affairs session. Can someone tell me whether my voice is clear and is this screen clearly visible to all of you? आवाज आ रही सबको? All clear? Good morning, good morning. Okay, so welcome to today's session. We'll be doing current affairs of 12th and 13th March 2024. Okay, so as all of you know, the exam dates are almost approximately clear, so stay locked in. ठीक है, अब फुली सीरियस होने का काम टाइम आ गया, अच्छे से दबा के मेहनत कीजिए. ठीक है, 2-3 महीने की मेहनत है and then it's a success for all of you guys. Okay. Good morning. Chalo. So first we'll start with ESI. Okay, and then ESI, and then further national, international, and all those. Apna jo usual hai, we'll be doing with respect to that only. So the first is mandatory listing for upper layer NBFCs. So in case of listing, they're talking about that these NBFCs which are there in the upper layer NBFCs regulatory structure, they should be listed on the stock exchange. Okay. इसमें basic details you should know is NBFC 4-tier structure, and also to understand this news you should also know about listing. ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं. So let's revise these things. So what are the various tiers in NBFC's 4-tier structure? Everyone, पहला है base layer, isn't it? Base layer NBFCs. What is the criteria for such type of NBFCs? Anyone? बेस लेयर का क्या क्राइटेरिया है? In base layer, all non-deposit taking NBFCs having asset size less than 1,000 crores, isn't it? And what about middle layer? Which type of NBFCs do come in middle layer? एक तो बेसिक हो गया कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs that have asset size more than 1,000 crores. तो एक तो वो केस सिनेरियो हो गया. What about other type of entities that do come in middle layer? We also have deposit taking NBFCs. Where does these deposit taking NBFCs come? And is there any restriction with respect to asset size within their categorization? कोई asset size से related उनका भी categorization है कि नहीं है? See, this is a basic thing that all of you must know. NBFC के 4 tier आपको हमेशा पता होना चाहिए. UCBs के भी 4 tier आपको हमेशा पता होना चाहिए. Okay. So non-deposit taking, asset size more than 1,000 crores, and deposit taking NBFCs irrespective of their asset size. ठीक है, जितने भी deposit taking NBFCs हैं, those will come in middle layer irrespective of their asset size. So this is what the base and middle layer is. Okay, and then we have upper layer. Upper layer में कौन आ रहा है? In upper layer we have the top NBFCs in terms of asset size. So the RBI told us about when they came up with this regulatory structure that there will be top 10 NBFCs that will be there in upper layer on the basis of asset size. But abhi actually kitni hai? If you see the reality right now, how many NBFCs are there?
The idea was to have top 10 NBFCs, but right now how many NBFCs are there in the upper layer? Rough approximation. Yes Sajal, correct. 15. ठीक है? And then we have top layer, which RBI says that it ideally should be vacant. ठीक है? Because top layer will probably be consisting of such NBFCs which are systematically very important. ठीक है? जैसे हमारे पास 3 बैंक हैं that are systematically important banks. Okay, in similar fashion, right now nobody is there in top layer. So that's the 4-tier regulatory structure for you. So in context of that upper layer NBFCs, the RBI is saying कि आप लोग अपनी लिस्टिंग जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, एंड दिस इज अ मैंडेटरी डायरेक्टिव टू ऑल ऑफ यू. ठीक है? सो नाउ लेट्स रीड द न्यूज. नाउ इट विल बी मच मोर क्लियर. The news says the upper layer NBFCs are mandated by the Reserve Bank of India to list on a stock exchange within 3 years of classification. ठीक है? तो most probably in 2022 they were classified into different categories, 22, 23. So the Reserve Bank of India is saying आप जब भी classify हुए हो उसके 3 साल के अंदर get yourself listed on a stock exchange, and this is only for top layer, no, not sorry, top layer, upper layer NBFCs. Okay, so 5 companies are required to launch their IPO within the next year, and these are the companies: Bajaj Housing, Piramal, Tata Capital, HDB Financial Services, Aditya Birla Finance. Okay, HDB के बारे में we have read a news in the previous session. How many of you remember what was the news all about? So Buddha, we have a different classes for PIB, so you can go over there. ठीक है? In context of HDB Financial Services, we've read a news with respect to subordinated debt as well as perpetual debt. है ना? So make sure you guys revise all these things. The compliance deadline for listing of these companies on stock exchanges, that by September 2025 they need to fulfill their obligations. Any confusion in this to anyone? हाँ देख लो उसमें conceptual basis, because of the conceptual understanding I gave you that news in which the subordinate debt as well as perpetual debt terms were there. Okay, which we understood that subordinate debt in context of creditors list only come just below the regular creditors, whereas perpetual debt owners, they come just above the equity ones. Okay. Now next is IIFL Finance compliance report with RBI. अब देखो इन सब चीजों में these things are very important, especially when we're talking about RBI putting restrictions on various companies. तो everybody already knows Paytm, तो 197 का तो हम लोग को पता ही है. ठीक है? And every year, especially in phase 1 GA, such type of question usually come. ठीक है? Almost हर बार का है. ठीक है? तो these prominent institutions, especially in diverse fields, if you can understand and if you can remember, they will fetch you 1 extra marks in the examination. ठीक है? अब in context of Paytm payment banks, you have this institution over there. In context of penalty for issuing of debt securities, उसमें धांधलेबाजी चल रही थी. तो what was that company? That was put on restriction by regulatory agencies like SEBI as well as RBI. Debt securities का भी हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था. एक कंपनी थी ना जो डेट सिक्योरिटीज में धांधलेबाजी कर रही थी. Yes, Saptadeep, correct. JM Finance. So please remember that thing also. आप लोग याद करके रखो कि JM Finance was restricted on the basis of issue in debt securities. Similarly, IIFL,
है ना. IIFL Finance Company was put restriction on in context of what particularly? They were put restrictions to seize all their existing or new gold loans. ठीक है. तो ये सारे प्रोमिनेंट कंपनी को याद करके रखना, और डेफिनेटली आई एम श्योर आप लोग देखना एग्जाम में पक्का आएगा, एक आध क्वेश्चन तो फंसेगा ही, और चाहे किसी भी शिफ्ट में फंसे, मॉर्निंग शिफ्ट और मे बी इन द इवनिंग शिफ्ट. हम लोग हर वो छोटी छोटी आप लोग चेक करते हो कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया, या फिर पेनल्टी लगा दी, बट इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना. दीज आर द प्रोमिनेंट थिंग्स जो न्यूज़ में कंटिन्यूसली चले जा रही हैं, एक एक हफ्ते तक न्यूज़ में बनी हुई हैं. These are the things which have high probability of getting asked in the examination. Okay, so IIFL Finance, which was put under restriction by the Reserve Bank of India in context of disbursement of gold loans. ठीक है. अभी न्यूज़ क्या है? IIFL Finance has complied with whatever directions that the Reserve Bank of India gave, and after which they have done all these things, capping such cash disbursement for gold loans. ठीक है, मैक्सिमम 20,000, कंडक्टिंग गोल्ड ऑक्शंस एट द तालुका लेवल, implementing changes in assessing gold purity, creating internal mechanism to ensure adherence to loan to value ratio below 75%, and ensuring transparency in charges levied on customer accounts. तो आप लोग इसको एक बार बस randomly देख लेना, and this way can become important if you can utilize in context of descriptive when you're talking about RBI's regulations in different area. Banking regulation में आपको पता है कि in case if any bank is on the verge of let's say bankruptcy और या फिर bank run like conditions हो रही हैं, तो you know that we have a prompt corrective action framework, तो in which the RBI put restrictions with respect to various things. Loan disbursement कम कर देते हैं, बहुत सारी चीजें कम कर देते हैं, उनसे बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं withdrawal कम कर दो. तो you guys already know that these are the various steps that RBI takes in order to protect that bank. Similarly, in context of Paytm payment banks also, you are getting aware of what RBI usually do. Now, even in case of gold deposits or gold disbursements, these are the steps at least you can get to know कि in context में RBI provides steps like these so that a company which is responsible for gold disbursement get protected. तो इन सब चीज़ों को आप लोग यूज़ कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में in case if you are writing an answer with respect to RBI banking regulation or RBI regulations on financial institutions. It can give you a diversity in your answer. Banking regulation तो हर कोई लिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेटीएम पेमेंट बैंक लिख देगा, आप गोल्ड के बारे में भी लिख दो तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे, and obviously within the word limit as well. So is this clear to everyone? चलो, next is SEBI receives Green Climate Fund approval for $120 million. ठीक है? For those of you who already read the chapter of sustainable development and environmental issues that we've done in the class itself, the Green Climate Fund is established under the domain of which international convention? किस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंडर ग्रीन क्लाइमेट फंड बना है? हर साल कॉप की मीटिंग होती किस चीज के अंडर है? सीओपी की मीटिंग पंचामृत हम लोगों ने किस अग्रीमेंट के अंदर दिया है, या किस ऑर्गेनाइजेशन या किस फ्रेमवर्क के अंडर हम लोग बात करते हैं? कॉप इज जस्ट अ मीटिंग नितिन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26th मीटिंग, बट वो मीटिंग किस फ्रेमवर्क के अंडर हो रही है? यस करेक्ट, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो बी वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू सच टाइप ऑफ थिंग्स. तो अंडर दिस यूएनएफसीसी, this Green Climate Fund was established, which was responsible for providing funds to various stakeholders for two purposes. अगर आप ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करोगे, ये दो पर्पस के लिए बनाया गया था.
so that it can fund various mitigation projects and also adaptation projects. Okay. When we talk about mitigation, we talk about reducing the amount of greenhouse gas emissions from the earth, and when we talk about adaptation, we talk about various projects that increases our resilience to such type of future environment which will be much more impacted by the climate change. तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, आपको पता है कि आने वाले साल में, ठीक है, मालदीव्स या इवन लक्षद्वीप जैसे एरिया, यू नो, दे विल सिंक और दे विल गो, you know, the sea level will rise at that much level that they will sink. So to protect themselves, what type of infrastructure that they need to develop so that they can live in that kind of environment also. So that is what adaptation projects is. Mitigation में क्या हो गया, जो ग्रीन हाउस गैस emissions हो रही हैं उनको reduce कैसे करें, उनको mitigate कैसे करें, ठीक है. So this green climate fund is responsible for funding various institutions so that these two things can be developed. So in similar fashion, as you can see, this Green Climate Fund has provided SEBI $120 million for various green projects. Okay. And what does this project do? It will focus on investing in early stage companies that are utilizing technology to promote climate solutions and sustainability in India. So is this clear? Simple सी news है. आपको green climate का utility समझ में आ गया? Next is RBI's $5 billion sell by swap to augment liquidity. ठीक है, तो basically कुछ नहीं, it's just a regular thing that RBI does every year, especially in the month of March. And why specifically in the month of March? March में ऐसा क्या होता है कि RBI को ये buy sell swap का एक्टिविटी करना पड़ता है जिससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाए या इकोनॉमी में बढ़ जाए एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. और एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में सारे स्टेक होल्डर्स बड़े सतर्क हो जाते हैं कि भैया पेनल्टी ना लगे, उससे पहले सरकार को जितना टैक्स हमारा बनता है पकड़ा दो. तो ऑल ऑफ यू नो वेदर वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है. तो जितनी भी हमारी डायरेक्ट टैक्स लाइबिलिटी एज एन इंडिविजुअल बनती है फॉर पर्सनल इनकम टैक्स, फॉर कॉर्पोरेट टैक्स एंड इवन जीएसटी टैक्स, ठीक है, ऑल दीज टैक्सेस विल डायरेक्टली गो फ्रॉम ओवरऑल इकोनॉमी और ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम टू गवर्नमेंट्स अकाउंट, ठीक है. अब वहां जाके कुंडली मार के पैसा बैठ जाएगा. अब जब ये हो जाएगा तो बहुत सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम से निकल गया, तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी की कमी होगी, अब बैंक अपना नॉर्मल ऑपरेशंस भी नहीं कर सकती. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट और इन ऑर्डर टू रिचार्ज द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, आरबीआई डज दिस डॉलर रुपी बाय सेल स्वैप. इसमें कुछ नहीं, आरबीआई कह रहा है कि आप ना मेरे से डॉलर खरीद लो, ठीक है. आरबीआई विल सेल डॉलर टू द बैंक्स, ठीक है. दिस विल इंक्रीज लिक्विडिटी एंड इट्स अ 2-year स्वैप, ठीक है. सो द सेम थिंग आफ्टर 2 years banks will return it back to Reserve Bank of India, but at least for the moment they will have huge amount of liquidity. Okay, so this is what the news is all about, nothing else. Next is Financial Industry Development Council advisory to NBFCs. Please do compliance and please ensure proper governance in your institutions. Okay, because as all of you know that recent actions from Reserve Bank of India and SEBI against IIFL Finance and JM Financial Products highlight the importance of strict compliance and governance. We do not want, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था इन कॉन्टेक्स्ट इन एनबीएफसीज, स्पेशली इफ यू फोकस ऑन 2016-17. व्हाट वाज दैट क्राइसिस? इट वाज IL&FS क्राइसिस, है ना. तभी सबको समझ में आ गया था कि
NBFCs को तो बड़ा ध्यान से रेगुलेट करके रखना पड़ेगा. So for the moment we've had a very good time period in which there were no big issues with respect to NBFC sector, but right now frequent issues आने लग रहे हैं. IIFL में issue आ गया, JM Financial Products में issue आ गया. So in context of that, this advisory group, okay, this Finance Industry Development Council advisory, they're asking these NBFCs to focus on compliance and governance. Okay, they're asking them to focus and comply with all the relevant laws and regulations, monitoring end use of loans, कि लोन देके बस छोड़ मत दो, पूछो उनसे कि लोन यूज कहाँ कर रहे हो, and zero risk appetite, emphasize zero risk tolerance for regulatory risk. Basically regulations में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे regulations आपको comply करने हैं, कोई zero tolerance मतलब कोई गलती नहीं. Okay. Next is consumer price index and consumer food price index update. तो यूजुअली आई डू नॉट पुट इट बिकॉज मंथली डेटा तो एनीवेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओवरऑल स्टैटिक तो आपको समझ में आते ही है, बट दिस कंटेन्स अ लॉट मोर डेटा. ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लिटिल बिट ऑफ स्टेट डेटा एज वेल. we'll just read a little bit of this consumer price index data. So CPI rose by 0.16% and CFPI 0.11%. Okay, and it's the data about February. So we'll just go to the state-wise data. So inflation across states are above RBI threshold of 6%. So 4 states exceeded threshold from 5 previously: Odisha, Telangana, Haryana, Assam. Above national average, that is 5.1%. 7 other states are also there, including UP, Rajasthan, Gujarat, Karnataka, Andhra. So basically कितने हो गए total? 12. 12 states are above national average. तो at least आपको एक rough idea लग जाता है कि in terms of whenever we'll be talking about inflation, we usually talk about inflation in the whole macroeconomic perspective. तो पूरे state, पूरे when I'm talking state, we are talking about the whole country. उस context में बात करते हैं. But if you can add additional points that usually if you see the data of February, 12 more states are above the national average of 5.1. So it's a stark situation. We need to focus on state level inflation as well. ठीक है? And the lowest inflation we witnessed in Delhi, MP, Uttarakhand and West Bengal. ठीक है? So have this idea with yourself that which state usually have the probability in context of high inflation as well as low inflation. ठीक है? Next is a committee on digital competition law was set up, under the chairmanship of Corporate Affairs Secretary Manoj Govil. Okay, so this committee actually gave its recommendations just now, and it talked about various regulations, just like how RBI give regulations in order to regulate a particular sector. Similarly, in that particular fashion, this committee on digital competition law also gave such a type of regulations. ठीक है, इन्होंने रेगुलेशंस में क्या बोला है? तो पहली बात तो लेजिस्लेशन होना चाहिए हमारे पास. अगर सरकार कोई चीज को रेगुलेट करती है, सरकार के पास पावर भी तो होनी चाहिए, वरना ये सारी चीजें चैलेंज हो सकती हैं सुप्रीम कोर्ट में. एंड ओके, सो इफ वी कैन enact a law in the parliament that gives the power to the center, be it the Ministry of Corporate Affairs, to regulate all these entities, that would be the first thing that you need to do. Okay, so what is it telling us? That recommends legislation to regulate market power of big tech firms like Google and Meta. ठीक है? Then they also want to talk about upgrading the existing legislation of Competition Act of 2002. ठीक है? Which they say is inadequate to regulate the current digital landscape. The proposed law which they are saying is Digital Competition Act to equip Competition Commission of India to address competition matters more effectively. ठीक है? And these are the various features of the proposed law. इसको करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. ठीक है? बट एटलीस्ट आप लोग कमेटी का नाम याद कर लीजिए, कमेटी के चेयरमैन का नाम याद कर लो. ठीक है? एंड विच एंटिटी दे विल बी यूटिलाइजिंग एज अ नोडल एजेंसी in order to
protect the industry or in order to regulate the industry. These things are the important ones. Okay, so please keep this thing in mind. Next is Chief Economic Advisor predicts financial year 24 GDP growth rate to be closer to 8%. Okay. So what was RBI projection for the same financial year? You guys all were studying the same thing. RBI का projection 7%, financial year 25 का है वो. ठीक है, गलती मत करना एग्जाम में. ओके मैथ्यू. Initially, Reserve Bank of India was saying that we'll be having 7.6% growth rate in financial year 24, but the recent governor's speech somewhere, he talked that, RBI also thinks that the growth rate in financial year 24 will be close to 8%. तो similar है. ठीक है? देखो, this happens if you have huge information, huge facts. ठीक है, मुझे पता था कि आप लोगों में से बहुत लोग 7% बोलोगे, क्योंकि 7% we've already read in the Monetary Policy Committee, projections of GDP, where the Reserve Bank of India said the 7% financial year 25. But be very clear about which financial year I'm talking about and which financial year you will be answering in your exam. ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 2 बार पढ़ लेना, लेकिन गलती मत करके आना, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं उसमें गलती करोगे तो फिर दुख बड़ा होता है. ठीक है, और उसके चक्कर में अगर मान लीजिए 1 मार्क से कट ऑफ नीचे गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो दुख लगेगा. नहीं, 7.6 बोला था, बट उसके बाद फिर ये लोग बोलने लगे कि 8% के आसपास मामला बैठ जाएगा. ओके, चलो. नेक्स्ट इज इंडिया अप्रूव्स OCI कार्ड फॉर 7th जनरेशन इंडियन ओरिजिन मॉरिशियंस. ठीक है, तो सिंपल सा 1 लाइनर न्यूज है, इसको याद कर लेना. इंडिया has approved a special provision allowing 7th generation Indian Mauritians to be eligible for getting overseas citizen of India card. ठीक है, just to have reconnect with Indian heritage. Now we'll come to national and state news. So NLC India joint venture with Rajasthan for energy projects. Okay, so this NLC India company and Rajasthan government has signed an agreement for establishing a joint venture to establish 2 power projects in the state. ठीक है, so they have done an agreement with Rajasthan Urja Vikas Nigam Limited with the project cost of 7,000 crores. Next is India import pulses from Brazil. Okay, तो न्यूज़ में तो सिंपल सा ब्राज़ील के कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ थी कि इंडिया ब्राज़ील से pulses खरीद रहा है. And obviously, as all of us know, that we do not do domestically so much pulse production. So that's why we need to do a lot of imports, because consumption in context of pulses are very high. Pulses is a staple diet in context of protein for vegetarians in India. ठीक है, it's a very good source of protein. So naturally they'll add, when the population is getting much more conscious with respect to healthy diet, तो pulse consumption naturally grow कर रहा है. But in order to fulfill that consumption, we need to have production. अब domestically तो है नहीं, तो we are importing from a lot of states. अब एक स्टेट से करेंगे तो naturally we will be having huge risk in context of inflation. अगर मान लो सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो वी आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ पल्स प्रोडक्शन. ठीक है, सो इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट यू कैन सी दैट इंडिया has initiated the sourcing of urad dal from Brazil to diversify its import dependence on few countries. ठीक है, the first consignment has also arrived. So not only Brazil, we also have an agreement with Argentina as well. ठीक है, so this is a news, but I have added this so that you can understand that which are the top 5 countries in terms of imports
related to pulses that we do. ठीक है. So the first and the most primary country is Myanmar. म्यांमार से हम लोग सबसे ज्यादा पल्स का इंपोर्ट करते हैं. Then Canada, and this is the data with respect to financial year 23. Mozambique, ऑस्ट्रेलिया, तांजानिया. ठीक है. अब ये देखो ब्राजील और बाकी सब अभी धीरे धीरे वी आर ट्राइंग टू increase their source or increase their share in our imports of pulses. Okay, then in the next time period we want every other source to come up to this place, जिससे हमारा diversification हो जाए और risk कम हो जाए, at least in terms of imports. ठीक है. Another important thing is that we have a MOU with Myanmar with respect to exclusive urad dal imports. ठीक है, कि जितनी भी उड़द दाल आप बनाओगे अपने म्यांमार में सारी हम खरीदेंगे. Is this clear? I hope all of you can remember Myanmar, Canada and Mozambique as the top 3 nations in terms of exports or in terms of imports of pulses. Chalo, next move on to next news, which is Prime Minister Modi to launch one station, one product stalls. Okay, so this is in line with, you know, focusing on promoting the local, famous produce. So similarly, Prime Minister Modi inaugurates one station, one product stalls at 205 railway stations in Southern Railway. It promotes local for vocal, vocal for local, vocal for local vision of the government of India. It provides a market for local and indigenous products, create additional income opportunities for marginalized sections of communities. ठीक है. तो एक और बस स्कीम का नाम है, आप याद करके रखिए. One station, one product. Next is and such type of thing usually also comes because थोड़ा अगर कुछ state अगर किसी element को ban कर रहा है which is harmful in the context of environment, तो environment का topic तो आपके पास anyways है ही, तो sustainable issues में it usually can come. तो कर्नाटका बैन्स कलरिंग एजेंट इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन. तो जितनों ने भी गोभी मंचूरियन खाई है देख लो ध्यान से, बाद में थोड़ा ध्यान से खाना, उसमें कलरिंग एजेंट होने के पूरे चांसेस हैं. एंड दैट कलरिंग एजेंट नेम रोडाबाइन बी यूज्ड इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन इज प्रोहिबिटेड बिकॉज ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स. अच्छी तो लगती है, ठीक है, गोभी मंचूरियन किसे अच्छी नहीं लगती, बट अब ऐसी न्यूज सुनेंगे तो कहां से खा पाएंगे. चलो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्री हॉस्पिटल केयर बेनिफिट्स. ओके, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एज ऑल ऑफ यू नो दैट द मोस्ट प्रोमिनेंट स्कीम in context of providing hospitalization cover of up to 5 lakh rupees to a particular family irrespective of the size of the family. ठीक है, for secondary as well as tertiary care hospitalizations. ठीक है, जिसका pre hospitalization it covers the expenses from 3 days pre hospitalization up to 15 days post hospitalization. तो ये तो basic details हो गए, but the news is important in context of the data that it is providing to us. ठीक है, स्कीम का डॉक्यूमेंट आपके पास होगा. ठीक है, आप लोग स्कीम के नोट्स बना रहे होंगे, उन स्कीम के नोट्स में ये जो डेटा आ रहा है ना उसको भी आप ऐड कर लो सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट इन डिस्क्रिप्टिव. सो अप्रोक्सीमेटली ओवर 65 मिलियन बेनिफिशियरीज अक्रॉस इंडिया, अप्रोक्सीमेटली 82,000 करोड्स यूटिलाइज्ड सिंस इंसेप्शन. हेल्थ कवर का डेटा पता ही है आपको, टारगेट पॉपुलेशन 107 मिलियन पुअर हाउस होल्ड्स. बेनिफिट्स कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज डिटेल्स. ओके, चलो नेक्स्ट इज 12th एडिशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ डिस्काउंट्स. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन टर्म्स ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट इज अ इंडेक्स लाइक रिपोर्ट. तो हमको एटलीस्ट टॉप की डिटेल्स तो पता होने चाहिए. एनी क्वेश्चन कैन कम, स्पेशली इन फेज 1 जीए. फेज 1 जीए का थोड़ा स्कोप बड़ा रहता है, तो उसमें आपसे रैंकिंग उनको दिखी तो पूछ लेते हैं. ठीक है, तो इट्स बेटर टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट 14 out of 55 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रिसीव
A+ रेटिंग। ठीक है, स्टेट कंपनीज और स्टेट यूटिलिटीज ऑफ गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश are also in A+ or A category, and apart from this 2 private utilities in Odisha as well as in Dadar Nagar Haveli, they also have received A+ rating. ठीक है, and let's see who are at the top 5 positions. So the first is Adani Electricity Mumbai Limited is at the first position. Torrent Power Surat, second position. Torrent Power Ahmedabad at third position. Gujarat State Power Utilities at fourth, and Uttar Gujarat Wij Company Limited at the fifth. तो 4 तो गुजरात की हो गई, ठीक है, 1 मुंबई की हो गई, तो ये तो इस तरीके से याद आ जाएगा। ठीक है, so this integrated rating of discoms was started from 2012, तो almost 12 साल हो गए इस चीज को। This is done by Ministry of Power, okay, and the nodal agency, the ministry utilizes this Power Finance Corporation for doing this. Please remember these top 5 positions and these details with respect to which state utilities, private utilities, and how many distribution companies receive A+ rating. Next is nationwide talent spotting program named Kirti, launched by the government of India, especially Ministry of Sports. ठीक है, तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम. प्लीज रिमेंबर not only the name Kirti but also its abbreviation, Khelo India Rising Talent Identification Program. Okay, so the Union Sports Minister inaugurated the program at the Sector 7 complex in Chandigarh. Who is the target audience? School children aged between 9 to 18. Okay, they will be identified for future. Now we'll move on to international news. So European Free Trade Agreement Pact benefits for Norway-India trade. तो बेसिकली कुछ नहीं कह रहे हैं कि जीरो टैरिफ ऑन एक्सपोर्ट्स के बेसिस पर द नॉर्वे इंडिया ट्रेड विल ग्रो. तो इतना सा है, बट एटलीस्ट लेट्स रिवाइज, इसी बहाने रिवाइज कर लेते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्वे, विच 3 कंट्रीज आर मोर इन यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन? एनीवन? Switzerland, correct. What else? Liechtenstein, ठीक. And Iceland, ठीक. बढ़िया, ठीक है. So be very clear with respect to these 4 countries. अब ये 4 कंट्रीज के नाम आपको क्वेश्चन, अब देखो यही सारे टॉपिक्स तो हैं जिनके बारे में सरकार प्रोमिनेंटली आप सबसे बात कर रही है न्यूज़ के थ्रू, पीआईबी के थ्रू, यही सब तो पूछेगा. इसके अलावा क्या पूछ लेगा? ठीक है, आप एग्जामिनर का माइंडसेट भी सोचिए. एग्जामिनर ऑल्सो वांट्स टू आस्क यू फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, ठीक है, नॉट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर, कि कोई रैंडम कहीं से उठा ले. चलो, लेट्स मूव ऑन. To all EU states support second term for IMF chief. So the current IMF chief is Kristalina Georgieva. Okay, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा का सेकेंड टर्म देने के लिए सारे EU के स्टेट्स मान गए. ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली शी विल बी द सेकेंड, यू नो, शी विल बी होल्डिंग और शी विल बी स्टेइंग एट हर पोजीशन फॉर द सेकेंड टर्म ऑल्सो. तो इसमें बस इतना सा है, नाम याद करके रखें. IMF के चीफ का नाम क्या है? मोस्ट प्रोबेबली अगर इलेक्शन भी हुआ तो आपको वो भी याद रहेगा. Now we move on to defense and science and tech news. So Pi is the upgraded friendly chatbot made by Inflection AI. ठीक है? So please remember the chatbot named Pi, developed by Inflection AI. ठीक है? It was developed by Mustafa Suleyman, Reid Hoffman, and Karen Simonian. Suleyman is a former head of applied AI at DeepMind. Hoffman, co-founder of LinkedIn.
ठीक है, these people have developed the PI. ठीक है. Next is India's indigenous 5th gen fighter jet advanced medium combat aircraft AMCA. ठीक है. In order to develop AMCA, the cabinet has approved 15,000 crore for this project. ठीक है. The cabinet committee on security has approved 15,000 crore project to design and develop advanced medium combat aircraft. ठीक है. So Aeronautical Development Agency under the guidance of DRDO will be designing it, okay, or will be leading the project, and Hindustan Aeronautics Limited will be handling manufacturing. ठीक है. So please remember the name, full form, how much is the project costing, ठीक है, and what are the agencies that are involved in the production of this aircraft. Next is NASA ISRO collaboration satellite, NISAR satellite. So NISAR satellite will be launched in December 2024 as it aims to measure Earth's changing ecosystem, dynamic surfaces and ice masses. Next is NextCar 19. It's the new cancer therapy developed by IIT Bombay. ठीक है. It utilizes CAR-T cell therapy for treating cancer patients. Then we have mission Divya Astra announced by Prime Minister, ठीक है, for successful firing of Agni 5 ballistic missiles, especially in context of multiple independently target entry vehicle technology. ठीक है. तो ये मिशन दिव्यास्त्र DRDO का है, which was talking about firing of Agni 5 missile. तो अपने पास सबसे बढ़िया intercontinental ballistic missile Agni 5 है, the most highest range that we have in terms of any missile. But apart from that range, apart from being intercontinental, it also has this MIRV technology. So what does this MIRV technology does? It allows a single missile to carry multiple warheads. ठीक है. एक मिसल जाएगी, 4 जगह दाग के आएगी. ठीक है. तो एक मिसल से 4 सिटीज गई, जहां की भी आपको गिरानी हो. ठीक है. इट इनेबल्स डिप्लॉयमेंट ऑफ मल्टीपल वॉरहेड्स एट डिफरेंट लोकेशंस, एनहांसेस मिसिल्स इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज. ठीक है. सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म, एंड व्हाट इज अग्नि 5. इट्स अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, range over 5,000 kilometers. ठीक है. Next is central government signs 200 crore pact for anti-drone systems. ठीक है. Because आपको पता है कि ड्रोन के रिगार्डिंग we are highly and any country is highly susceptible to drone attack. कुछ नहीं करना यार, मशीन को ले जाके बताओ, क्या कहते हैं, किसी भी कंट्री को आप तबाह कर सकते हो. Especially that was prominently used in the war that happened in Central Asia between Armenia and Azerbaijan. ठीक है. अजरबैजान कैसे जीता है? मोस्टली देव यूटिलाइज्ड ड्रोन्स. क्या करोगे? ठीक है. ऊपर से ड्रोन आया, देखा वहां पे लोग आराम से स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, गए. ठीक है. सो इट्स अ asymmetrical methodology in context of warfare. To in order to protect our, or in order to strengthen security, we need anti-drone system. So center has signed 200 crore pact with Big Bang Boom Solutions. नाम भी बढ़िया है, Big Bang Boom. That will be protecting us against drones. चलो, ठीक है. And this is the largest contract under Innovation for Defense Excellence Initiative under Ministry of Defense. Next is India's arms import data. ठीक है. तो इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 10%, बट अगर आप स्पेसिफिकली जाओगे तो 9.8% ऑफ द टोटल ग्लोबल इंपोर्ट्स फ्रॉम 2019 टू 2023. ठीक है. एंड दिस इज द रिपोर्ट बाय स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री. ठीक है. सिप्री बोला कि इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करता है दुनिया में. अगर
क्या कहते हैं 10 करोड़ के आर्म्स इंपोर्ट हो रहे हैं तो 1 करोड़ तो इंडिया करता है, ठीक है। एंड इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड: इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. The 5 largest arms exporter were, and these are exporters: US, Russia, France, China and Germany. Import increases. It increased by 4.7% from the previous report, and the main supplier which has the highest, which has the highest share in terms of India's import of आर्म्स इज रशिया. रशिया से हम लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं, ठीक है. चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट. इसरोज इनसैट 3DS सैटेलाइट कैप्चर फर्स्ट इमेजेस ऑफ अर्थ, ठीक है. तो just remember that this INSAT 3D satellite is responsible for capturing earth images of earth, ठीक है, with accuracy. Next, sports news. So the French Open in context of badminton that happened in Paris, in women category, An-se Young of South Korea, she defeated Japanese counterpart Akane Yamaguchi, ठीक है. So she won. And in men's category, Chinese Shi Yuki emerged victorious by defeating Thailand Kunlavu Vittisang, ठीक है. तो विनर्स के नाम याद करके रखिए, रनर अप्स के नाम याद करके रखिए और लोकेशन याद करके रखिए और उनके कंट्रीज याद करके रखिए. इससे ज्यादा और क्या ही पूछेगा. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स. सो AS Rajiv has sworn in or has been appointed as Vigilance Commissioner at Central Vigilance Commission, ठीक है. Ashwani Kumar elected as new president of Federation of Indian Export Organization, ठीक है. Next is biofuel. तो बेसिकली नेम वर्ड प्ले किया है. बायोफ्यूल के लिए this is a new startup that enables trading of biofuel across the country, ठीक है. बेसिकली इन्होंने एक स्टार्टअप बनाया जिससे ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द यूटिलाइज जितने भी बेचने वाले हैं और जितने भी खरीदने वाले हैं सारे एंटिटीज एक प्लेटफॉर्म पर आके बायोफ्यूल की ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है. एंड दिस बायोफ्यूल स्टार्टअप हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सेट अवार्ड and has been amongst the top 100 startup companies, ठीक है, in context of forward thinking solutions in World Energy Council. Yes, just like IEX, but e-commerce टाइप का बेसिकली आप अज्यूम कर सकते हो कि वहां बैठे हुए सारे के सारे ट्रेडिंग कर सकते हैं. जब भी ऐसी न्यूज मिले, मेक श्योर यू गो ऑन देयर वेबसाइट, आपको और क्लैरिटी मिलेगी. लास्ट, इंडेक्स डिक्लाइन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी रिपोर्ट बाय गॉथनबर्ग बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट. अब इवन दो इनको कौन बताए डेमोक्रेसी की क्या हालत है यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर मोटिवेटेड ओनली, बट हमने क्या करना है, हमने तो रटना है. न्यूज़ में आई है, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम लेट्स रीड इट. सो इट इज रिलीज्ड बाय गॉथनबर्ग बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट. इंडिया विच वॉज प्रीवियसली क्लासिफाइड एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी in 2018, it has declined to further become one of the worst autocracies as per this report. ठीक है. Then we have regime types. These are the type of categories: liberal democracy, electoral autocracy, closed autocracy. Report methodology. It involves 4,200 scholars from 180 countries.
ठीक है, इट हाईलाइट सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटिक डिक्लाइन इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर गवर्नेंस एंड सिविल लिबर्टीज। ऑटोक्रेसी बेसिकली ये मान के चलिए कि हाँ, यस, सिंगल पार्टी टाइप रूल। नो कमेंट बाय सर, किस रिगार्डिंग? डू यू थिंक इट हैज़ डिक्रीज? अब आप मेरे को एक बात बताओ, इलेक्शन सही से हो रहे हैं हर जगह, स्टेट में हो रहे हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, whether it is in state, whether it is in the country, all these elections are conducted in a smooth manner। तो प्राइमरी एस्पेक्ट तो हो ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट अच्छे से फंक्शन कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, these are the primary tenets of democracy। If all those things are happening fine, how can you say that the democracy is declining? That's why we say it's a motivated aspect। और दूसरा बताएगा क्या कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है। एंड वी आर द प्राउड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट इज MOU agreement and conferences। So SIDBI signs MOU with Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India for Jan Aushadhi Kendras। Okay, what's the objective? To provide term loans and working capital credit to Jan Aushadhi Kendras established by entrepreneurs। ठीक है, so this is all for today। If you have any question, feel free to ask, otherwise we'll wind up the session। नहीं, देखो ऐसा होता है ना मैथ्यू, यूजुअली पीपल थिंक कि कोई रिपोर्ट आई है जो इट पोर्ट्रेज इंडिया इनटू अ नेगेटिव टोन, तो हमको लगता है पूछेगा नहीं, पूछ लेता है, ठीक है। प्रेस वाला एक रिपोर्ट था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, तो दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक दिस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हमको पता है कि कितना मोटिवेटेड रिपोर्ट है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड। तो इट्स बेटर टू रीड देम, डू नॉट इग्नोर देम, ठीक है। आप लोग ऑब्जेक्टिवली प्रिपेयर करो, ठीक है। आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दो इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज ओपिनियन, व्हाट इज नॉट, यू जस्ट वर्क विद द फैक्ट्स, ठीक है। नितिन, GDP प्रोजेक्शन के लिए वील बी प्रोवाइडिंग यू अ लिस्ट, ठीक है। वो लिस्ट आपको मिल जाएगा एग्जाम से जस्ट पहले, तो फिर उस समय आप लोग रिवाइज कर लेना, बट अगर देखते चलोगे तो इट विल बी मच मोर बेनिफिशियल, ठीक है। चलो, आई विल वाइंड अप द सेशन बिकॉज वी हैव अनदर सेशन विद रिस्पेक्ट टू PIB MCQs ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग वो अटेंड करो, देन वील मीट लेटर ऑन इन द सर्कुलर सेशन। थैंक यू।